T20s और वनडे है सर. I don't think ये full उस पे क्योंकि Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to another episode of A Change of Pace live, but you'll also get a recorded version of this. It is the 20th of January, the last time we spoke. I can't even remember what was happening. It was 2019. The decade was still going on, and we were mustering about what is the Pakistani performance of the decade and what is in store for this glorious 10 years of cricket that is yet to come. Test cricket is dead. Long live Test cricket. That is the news coming from the Boxing Day test, which is how we kind of closed out the year. 80,473 people that showed up between a test match between Australia and New Zealand. Before we go to that, I've got my usual suspects, Ahmed Hassan and Ahmed Khwaja. Khwaja, how have you been? Happy New Year. Happy New Year and Assalamu Alaikum to all our listeners on Change of Pace. Yes, it's been quite a while since we've done a recap, since we've met, and plenty of cricket happening all over the globe. Plenty and of demerit points going around. Plenty of bans being given out, plenty of sledging going on, and thankfully Pakistan cricket is also back in a few days, so that's very good news. Ahmed Hassan, what about you? Yeah, good to be back, and hello to all the listeners. I think we haven't been around since last year. I just had to put that out there. Nice. 10 years ago. Took us a minute and a half. Yep, just needed to break that in. But yeah, lots of cricket and the demerit points. We had a discussion about this earlier. I think Change of Pace पे भी demerit points देनी चाहिए. Intern पे especially. यार rants और उन पे होना चाहिए. अगर कोई चीखे ना on air, फौरन बंद कर दो. जब भी अशाशा लगे तो 15 demerit point दे देना चाहिए. और 3 मैच की suspension. और bathroom में lock कर देना चाहिए हमें. यार Shasha, the news from the grapevine is that he might be back for the MCC. जिस rate पे सब लोग वापस आ रहे हैं. Yeah. Generally speaking, मतलब शोएब मलिक को भी वापस आने का मौका मिल गया. हफीज भी आ गया. PSL में शर्जील भी वापस आ गया. इमरान नज़ीर भी कोशिश में था कि मैं वापस आ जाऊं. यार I am extreme. I have been in the pro Misbah camp since the Miss You days. लेकिन जब आप ऐसी decisions लोगे, then it's very hard to defend your logic and your backtracking. ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह U-turn पे U-turn ले जा रहे हैं. It's a very bad sign. Logic exactly है क्या मतलब इस बार in the selection of the team that we're We'll get around to that. M. Falah Tahir is saying, missed you guys. I think you're the only one that has missed us. Not even our families miss us this much. वो भी जुम्मा ही फोन करते हैं. हाँ जी क्या हो रहा है यार ख्वाजा लास्ट टाइम ने जब बात की थी ना तो सीन ये था कि we were getting hammered in Australia. We had gotten hammered in Australia and we had basically nothing to take away from that series except Shaheen Shah being consistent in Babar's 100. And then we thought, okay, New Zealand are going to go to Australia and they're going to give them a fight. They're going to push them to the brink, and this is New Zealand's best ever test squad. And they got rolled over as bad, or maybe not as bad, but because there was no inning defeats, but they were awful against Australia. It was one of the worst performances I've seen from them of late. BJ Watling didn't come through. The only silver lining was basically Neil Wagner and that performance from the Tom Bundle, who got 100. Yeah.
यार आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड द न्यूजीलैंड टीम बिकॉज जब मैं लेट 90s अर्ली 2000s में हम जब मैच देखते थे तो हम उनको उड़ा देते थे. शबीर अहमद आके उड़ा देता था, मोहम्मद शमी हैट्रिक लेता था, मोइन खान हैज मेड अ टेस्ट 100 अगेंस्ट देम, सो दे वर आवर bully, we were their bully Notice boys. how Yeah, most two of those three were Karachi players. Yeah. We'll get to that as well. यार समी टेस्ट हैट्रिक लेना तो आप सोच लो ना खुद क्या उसका हाल था. बट दैट वाज ऑन इन हिज डेब्यू सीजन. मोइन खान यार ओवरसीज 100 मार रहा है. सो आई नेवर टुक देम सीरियसली एज अ साइड एंड इन ओडीआईज वी यूज्ड टू एब्सोल्युटली स्मैश देम. यासिर हमीद और इमरान फरद, मुझे एक सीरीज याद है उन पे 100 पे 100 मार शोएब अख्तर कहीं खेले ना खेले शोएब न्यूजीलैंड अख्तर के ने जो खिलाफ और 6 न्यूजीलैंड for में 16 उनको उड़ाता था. सो वी नेवर यूज्ड टू टेक देम सीरियसली. बस ये रीसेंट ट्रेंड है लास्ट प्रीवियस डेकेड का कि दे वर कम्पीटिंग एंड दे वर स्मैशिंग अस. और फिर यूएई में भी हमारे हादसे हुए उनके साथ. वी ड्रू दैट सीरीज इन 2014 और ये वाली तो रिसेंट जो शैम्बल्स जो हम सीरीज हारे हैं तो उधर. बट ऑफ कोर्स उम्मीदें थी कि कीवीज कुछ करेंगे. केन विलियमसन, लॉकी फर्गसन को भी उन्होंने टेस्ट डेब्यू दिया बट ही गॉट इंजर्ड. बेसिकली ऑल देयर प्लान्स वेंट आउट ऑफ द विंडो वेरी क्विकली व्हेन फर्गसन गॉट इंजर्ड. बोल्ट वाज नेवर फिट. केन विलियमसन डिडंट मेक रन्स और वही 3-4 प्लेयरों Both coming back and getting that wicket in the first over was nice to see though. 3-4 प्लेयरों की इनकी टीम में सऊदी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. 128 सऊदी की तो कोई पेस ही नहीं और ना बॉल मूव, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलर्स चाहिए ना. इनके पास पेस थी. neither were they really bothering the Australians except for when they went with that leg side short pitch tactic. और जैसा हमारा इंडिया वाला मेंटल ब्लॉक है वर्ल्ड कप में, इनका भी कीवीज का मेंटल ब्लॉक है ऑजीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में. उनको सीरियस ही नहीं Also, लेते. they don't get a lot of test cricket against Australia. I think this was their first Boxing Day test after 30 years or something. So that's यार आप ये देखो इंग्लैंड न्यूजीलैंड इज फॉर देम इट शुड बी एन एलीट सीरीज और वो भी 2 टेस्ट में उन्होंने फारिग कर दिया उनको खेल के. अभी इंडिया आ रही वो भी 2 टेस्ट. वही तुम्हारी वाली बात कि अभी रिसेंटली जो है ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट रिवाइटलाइज हुई है आफ्टर ब्रेंडन मैकलम being at the helm of New Zealand cricket. Yeah, two World Cup finals in a row. And they've been consistent in terms of semi-finals or quarter-finals. They always get to the knockout. They just haven't been getting across the line. And the last 2 World Cups are a prime example I think of it's that. a sliding doors moment कि अगर वो गप्टिल के 2 हो जाते और ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो क्या होता है इनकी क्रिकेट. Yeah, they're always the bridesmaid, it's always been the case for them. And I think this last Australia series was probably their best chance of being competitive with Australia. Unfortunately उनकी injuries और सारे जो plans थे वो बिल्कुल अब इंडिया भी उधर जा रहा है एंड इंडिया की हमने देखा है द टीम इज इन वेरी गुड फॉर्म. जस्ट वन अ वेरी इंपॉर्टेंट ओडीआई सीरीज. Very few flaws on that side. Honestly, I thought they had. I think India might even win the Test series there. I think chance है कि given the way that their fast bowlers are performing, which is what you need in a place like New Zealand, definitely. Bumrah fit हो गया, Shami भी विकेट ले रहा है. Saini is pretty good. Navdeep Saini is not bad. He looks like a test bowler. Quick. But in terms of tests, also, I mean, Ishant Sharma comes back and he's suddenly a brand new bowler over the last 3 or 4 years. So I think the reinvention of Ishant Sharma पे कोई deep dive होनी चाहिए कि ये हुआ क्या है. I think क्या ये छुप के गोश्त खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इतना बड़ा बॉलर बन गया एकदम. पिछले 3-4 साल से batsman in the world is vegan, so कौन? Virat Kohli. अच्छा बाबर तो मुझे यही लगा बाबर कब से vegan हुआ. If FHD KHD is saying hi. He's a What's up, bro? And speaking of good fast bowlers, Pat Cummins. I was looking at a comparison after that New Zealand series. He's now ahead of McGrath after 30 tests. That's some mark. Is he better? Would you have him over McGrath on your side? नहीं. I didn't get to see. I think in ODIs I would have him over McGrath, but Test में तो यार McGrath ने इतनी हमारी पैंटे लगाए. I would not have him over McGrath in ODIs. अगर आपको यार 2007 का वर्ल्ड कप नहीं याद आपको? McGrath ने वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप थी यार. ठीक है. 2003 में भी उसने यही किया था. मतलब Glenn McGrath, if you look at his record in terms of ODIs, he's got quite a phenomenal record. So I don't know. I would take McGrath over the fact that every single batsman who's ever faced him said he was the most difficult to face simply because वो एक ही जगह करा के गिरा के बॉल आपको समझ भी नहीं आता था मैं करूं क्या इसके साथ. अब ये ऑजीज की सीजन खत्म होगी क्योंकि ये तो यार बहुत लंबा खेल है. वर्ल्ड कप से खेल रहे हैं. Well, they've got the BBL now going on. I think they're just going to go back and play the BBL. There's no one who's going to go to Australia now. They're just going to finish off the BBL and maybe they have some limited overs cricket. Because they've played the World Cup, then the Ashes, then we toured, then New Zealand toured, now they toured in between. Sri Lanka toured. Sri Lanka भी आई थी. We got some nice clips of Dick Weller behind the stumps. It's the highlight of the series. Nathan Lyon again consistent as usual, picking up wickets in the second innings, and I think he is now becoming the best off spinner at least in Australia. But obviously he's not going to be able to eclipse Warren. But
he's up there, and he used to be a groundsman, so that's a यार that's a story and a half. the जो मज़ेदार बात है नेथन लाइन की करियर की, that basically at first he only used to do well in Australia. He struggled a few times. He got absolutely smashed in Asia. Then he came back. Then he took wickets in Sri Lanka. उसने UAE में भी विकेट लिए हैं, उसने इंडिया में भी विकेट लिए हैं, and he's become a complete off spin bowler, classical off spin bowler जो हर जगह विकेट लेता है. हमने देखा Ashes में भी उसने Well, that's मैचेस what's जीता है. impressive about him. He doesn't always need the wicket to get wickets. And he's almost can bowl become anywhere. undroppable now. मतलब हाँ. उनका जो lineup है, they never Legend go बन with गया उनका. exactly. For They sure. never In go with Test 4 cricket, pacers anymore. In Test cricket, after Steve Smith, it's probably Nathan Lyon or maybe Pat Cummins, who's after. और वो अपना जो on the लाबू team sheet. शाख ने इनको बना बनाया प्लेयर बन Yeah, गया that was my next point. Another legend who debuted against Pakistan. Yes. Marnus, Who didn't do so well against Yeah. Pakistan, but you know he ended up becoming. लेकिन वो जो हमने उसको मुफ्ता 2-3 विकेटें दी थी वो भी तब से प्लेयर बन गया. Marnus Lasagna is having a better run in Test cricket than Steve Smith. हाँ पता नहीं कब It's a 1200 purple रन patch मार that you गया can't, है. yeah, that you can't take away from him. But Double hundred against New Zealand. Yeah. He's got a couple hundreds against us. हमें भी मारा है he could have इतना had इसने. 3 150s on the trot. I think got out for 143 or 147 against the Kiwis in one of the matches. अब आप but देखो उनका वन डाउन वाला मसला सॉल्व हो गया ODIs में. ये बंदा आ गया या 2 डाउन में जो भी अगर आपने But स्टीव he's 40 से 50 दोनों matches में मारे हैं But उसने. Tim Payne came out and said this in the press conference that them two are inseparable off the field as well. Steve Smith and Marnus Labuschagne. They're Marnus bases his batting off of Steve Smith, a large part of it. बिल्कुल बिल्कुल. और इतनी जल्दी मुझे सिर्फ याद है माइक हसी स्टार बना था जब वो ऑजीज की टीम में आया था. ये तो बंदा फौरन आके ना पॉपुलैरिटी में ऊपर चला गया. हाँ एडम वोजेस की भी जो परफॉर्मेंसेस थी when he first came on the scene, मतलब एकदम से उसने बहुत सारे 64 रन्स बनाए थे. average. So it's now a matter of how does he perform once there is a lull or break within the season. अब क्योंकि इसके बाद जो उनकी अगली टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज आएगी, there will be a big gap, and if he has that mentality that Steve Smith has where he just wants runs badly, then that's what's going to set him The only apart. thing that he has in his favor that Adam Voges didn't is that Adam started a little late in He his was international 33 career, plus, 34 right? plus when So he was how playing. old is Marnus? 25, 26. Right. He's young. So he's got a little bit going for him there. Yep. And I think when we were speaking about the Pakistan-Australia series, we mentioned, and there was a little bit of consensus about this, that Tim Payne's going to be a walking wicket and he's a bit of a stand-in captain. But I was reading earlier today, prepping for the show, and he has the most test match catches for a wicketkeeper after 30 tests. यार वो एजेस तो प्रोड्यूस करते हैं ना ऑस्ट्रेलियन पिचेस. The fact remains that he's pouching them, and his primary job is to be a नहीं wicket कीपर तो वो कभी भी बुरा नहीं था, उसकी बस बैटिंग पे हाँ. इशू होता So था. there's no way now that you can go out and call him a temporary captain because he's going out and he's won the Ashes. Right? Exactly. अब And उससे he's बड़ा beat- क्या हो he's beat सकता है. Pakistan, he's हाँ. beat Sri Lanka, he's beat New Zealand. अब आप सोचो ये जो ऑस्ट्रेलिया में एशेज होगी इनके इंग्लैंड का क्या हाल होना है. For sure. और यार जिस किस्म के भी वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं एट होम, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी जो थी वो काफ़ी अरसे से डाउन जा रही थी. अब दोबारा स्टीव स्मिथ के वापस आने के बाद, डेविड वार्नर के वापस आने के बाद, द वे द बॉलर्स आर बॉलिंग इन होम कंडीशंस, इंग्लैंड आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. पैटिंसन भी फिट हो गया. जाय रिचर्डसन जैसे प्यारे बॉलर को चांस ही नहीं मिलता है यार. पैटिंसन को चांस नहीं मिल रहा बिकॉज़ उनके जो इस वक्त सही फ्रंट बात थ्री है. हैं वो जगह ही नहीं छोड़ रहे. हेजलवुड तो FHD बिल्कुल ही is छाया saying हुआ that है. he is very miserable with his DRS calls, but I think all the good captains around the world are facing challenges with the DRS. Falata here is saying, take some questions from Twitter. We'll get around that towards the latter part of the show. You know, when Ben Stokes got picked for the IPL, Khwaja, we didn't talk about it. We weren't talking cricket then, but I really thought it was one of the most overrated picks of all time. I thought Ben Stokes is mediocre. And don't get me wrong, I think you'll agree that the English have a bad habit of comparing everyone to like Ian Botham as soon as they get a couple of good games under their belt. And that was what they were going through then, and it was just like, Ben Stokes is going to be this and that, and then he got into some hot water with the police and that brawl outside the club, and I was like, oh God, not another one of these wannabe Flintoff, Ian Botham types. But he's proven me so wrong, and so frequently, and so consistently. It's remarkable. Day 5 of a test match, I was watching it around 6 p.m. UAE time, and I thought this is going to canter out to a draw. And they looked pretty good until that partnership was broken. And it was a pretty slow wicket. Like a lot of the English bowlers weren't getting pace out of that wicket. This man comes in and breaks his back, gets extra pace in that ball. That's what all of his teammates said, even the wicketkeeper included. It was hard to pouch his deliveries. They were that quick, and he manages to get that one breakthrough. And England end up winning the match with 11 overs to go.
यार अब आप उसका करियर ही आप पूरा देख ले, इट्स बीन अ कंप्लीट रोलर कोस्टर एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स सीरीज तो बीबीसी या नेटफ्लिक्स कोई ना कोई तो इस पे बनाया है भाई. 100% बनती है. Remarkable bowling. He made a debut 100 in his debut series in the Ashes Down Under at Perth. Then he became a star. Then he had that double in South Africa. He had that confidence shattering over in the 2016. Imagine the moments that you're going through. मतलब you are on the cusp of another World उसके Cup. आप career highlights ही बना लो तो यार कोई Hollywood film ही लगती है. After being so far down and then suddenly coming back in, winning the World Cup, having that match where he single-handedly wins at Headingley Test. Then everything he's done against South Africa in the recent series, bat, bowl, fielder, he's doing it all. Crazy player है यार. Easily one of the He greatest is the players most. in Or cricket. Flintoff in the best day of his life is not even half as good as this guy, man. That's a statement and a half. Flintoff की एक सीरीज थी, आप इसके stats उठा के देखो यार. Gonna get clipped. यार this guy makes test centuries, this guy wins you test matches, this guy wins you ODIs, this guy wins you T20s. What else do you want from this guy? Catches देखो, उसकी fielding देखो. I want him not to beat gay people outside of a club. Okay. I don't know why we're going there. But I won't. That's a low blow for me. He's made up for that and a half. नहीं तो he was defending gay people. ये scene हुआ था. वो gay homophobic नहीं हो रहा था, वो pro. My point is, as big of a Andrew Flintoff supporter or fan as I am, I've always been. Andrew Flintoff had about 3 years of his career in which he was phenomenal. 4 years. Phenomenal. Yeah, phenomenal. वो 4 साल थे जिसके अंदर मतलब वो 4, 5, 6 में he was very good. Right. उसके बाद जो है उसने 2009 के अंदर वापस आके वो तो उसकी कमर टूट गई, खत्म हो गया. He did what he had to, but by then he was losing it. Ben Stokes, in terms of his bowling, his batting, his fielding, just those moments that he has accumulated now, Flintoff doesn't have that under his belt. You know, he's the kind of guy, big guy for the big moments. He's got the greatest Ashes series of all time under his belt. Easily. So and this guy, he loves performing against South Africa. एक तो आपको याद होगा इसने जो 2017 में जो CT17 वाली समर थी उसमें भी इसने 200 मारे. उससे पहले इसने डबल 100 मारा था. इस दफा भी मैच विनिंग 100 मारा है. मतलब this guy loves to smash the proteas. And he puts his hand up when the moment arrives, right? If you're struggling to prize out the last 3 batsmen, he comes in, he's like, give me the ball, I'll do it. Yeah, and अच्छा मजे की बात है ये लोग इतना रो रहे हैं अपनी रेड बॉल क्रिकेट पे कि जी हम वनडे खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, हमारी रेड बॉल क्रिकेट या एशेज हम फिर हार गए. यार दे हैव स्टिल वन ओवरसीज सीरीज इन श्रीलंका और अब साउथ अफ्रीका में भी जीतेंगे. रबाडा नहीं है. हमारे हालात देखो, वो लोग इतना रो रहे हैं इस पे. वी वुड ड्रीम ऑफ विनिंग अ सीरीज इन साउथ अफ्रीका. अभी जो जहां इनके हमारे सपने पूरे होते हैं वहां ये यहाँ अप्लाई होती है. Seriously, man. But you know, their batting in red ball cricket has not always been the best. This is the first time they've got 400 in the first innings after a long while. Yeah, because look at how many new batsmen they're trying out. How many guys कर रहे हैं. Oli Sibley की बैटिंग आप 10 मिनट देखो, मुझे सर दर्द होगी. Sibley छोड़ो यार, मैं अगली बैट्समैन यार. तुम मुझे अगर रोरी बर्न्स को कहो कि भाई वो भी अजीबोगरीब फवाद आलम क्या उसकी गर्दन एक तरफ जा रही होती है, उसकी बॉडी एक तरफ जा रही होती है. अल्लाह माफ करे. इनकी टेक्निक ही खत्म हो गई इनके. तीसरा कराची का प्लेयर है जिसकी बेइज्जती की है ख्वाजा. रोरी बर्न्स, फवाद आलम. मैंने कहा रोरी बर्न्स कहां से आ गया. और मजे की बात है जो डेनली ना वो 100 कर रहा है ना वो 50 कर रहा है, फिर भी हर टीम में मुसलसल. He's ahead of Moeen Ali as a spinner. Well, Moeen's taking a break himself. Fine, whatever. My point is when they picked him even in the last Ashes, अच्छा, they said he's the 3rd best spinner in the country. Yeah. आपने ये recent article पढ़ा जो मोइन अली कंप्लेन करा था वो जी. I was the first to भाई आप अपनी परफॉर्मेंस देखो, आपने वर्ल्ड कप में कितने गंद मारे हैं. Yeah, Moeen has taken a break, a well-deserved break. He's done some good things for them versus India. नहीं, I just don't like the subtle hint of bias or racism जो उसने दिया है. भैया आपकी performance इतनी खराब थी. That's what he indicated. That's what he was inferring in this article. He was basically saying कि I was the first guy to come under pressure क्योंकि लोगों को ये लगता था कि भाई token pick है. ये जो इस वक्त pick हो रहा है, it's more about skills. Okay, let me ask you that. Well, is he a token pick? At some point he was. At some point he wasn't performing. ODIs के अंदर he wasn't. He was really bad. यार ODIs के उसके stats देखो, शायद अफरीदी वाली batting average है उसकी 40 की. You're saying he's a token pick. Those are two different things. I'm saying he was bad, and at some point he was a token pick because people were going to come out and say you're going to drop this guy after one bad performance. They gave him that chance. Are we ready to make that call that the English national cricket team is making token picks? यार टोकन पिक की बात नहीं, उसका बुरा वक्त शुरू हुआ था पिछले एशेज में. When he got absolutely down under वाली हुआ था. वर्ल्ड कप में भी देखो उसको वर्ल्ड कप में इतना खराब किया था उसने. 2-3 मैच हराए हैं यार. After they dropped him, they ended up performing. That win streak that they had was after they dropped him. प्लंकेट को टीम में लाए हैं. Exactly. और फिर वो क्या नाम है मार्कवुड टीम में आ गया था.
वो नाम पे चल रहा था कि यार बैटिंग भी कर लेगा बॉलिंग भी कर लेगा, but again I'm saying his average is 23 in ODIs, 35-40 plus की bowling average है. Well, speaking of spinners, 9 wickets for the spinners in this. ऊपर से वो जैक लीच भी वो बन गया, मीम बन गया, हीरो बन गया. Specsavers वाला. One run off what 70 something. Yeah. अच्छा वो इधर खेल ही नहीं रहा और उधर डॉम्बेस आके 5 विकेट ले गया. इतनी अच्छी बॉलिंग 5 wickets and Joe Root 4 wickets in today's innings. यार केशव की इतनी ज्यादा बॉल स्पिन हो रही थी, मैंने कहा था ब्रदर मोइन होता तो 10 विकेटें पक्की थी उसकी इस पिच पे. Well, I mean, he has to offer a little bit more, Moin, and I think he's taken a well-deserved break. I think he'll come back stronger, and I hope that it's our misunderstanding that it's the implication of him being a token pick. यार I think शुक्र है अगर जो अपकमिंग समर है हमारे खिलाफ तो नहीं होगा, हमें भी उसने 100 मारा हुआ है. Yeah. तो okay, I'll fine with Dombes ये वो. But I want to get to something, and this is something that Khwaja, you and I disagree on. I'm not sure. I don't have Ahmed's opinion on this yet, but I'll ask him first. That a lot of the action that happened with Ben Stokes, getting 72 up 47 and coming in and winning the test match for his team, happened on day 5. Now, there's been a lot of advocates for 4-day test matches recently. ICC has come out and said a few things, and obviously Virat Kohli and the BCCI have denied that. They're not big fans. Misbah and Waqar are not big fans. There don't seem to be a lot of fans of the 4-day test match. What do you make of it? 4-day versus 5-day cricket. Are you ready to lose a day? I'm okay with it. I don't think it's such a big issue because this is how it's done at a domestic level anyway. All first-class matches are played on 4-day circumstances. I don't think it makes a difference because you will adapt your cricket to a similar level. It will limit the number of overs that you're facing, in the first, second, third innings. Maybe it will propel teams to score at a better clip because we saw this England first innings here in South Africa in this recent match. मतलब उन्होंने पहले दिन पे क्या 150-160 रन बनाए थे off 90 overs. 210 और वो काफी slow दिन था. Exactly. So if you know that it's a limited time in terms of days, it will change the way that you bat, bowl, whatever. Also, at the same time, I don't feel it's going to take away from the moments that we're getting now because of a day 5. I feel it's just a matter of the way that you structure the cricket in terms of your approach to it rather than the number of days that are there. I don't think it's going to be a huge difference. There is no genuine argument for 5-day cricket. सिर्फ emotional arguments और कि don't mess with the classical और ये वो ये सब बातें. देखो जब आप if you are playing 4-day cricket over a weekend, that सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखना है क्रिकेट का. जो हम कहते हैं ना जी क्रिकेट को नहीं देखो, ये लोग खुद कोई मैच नहीं देखते. ये लोग टेस्ट क्रिकेट तो सवाल ही नहीं पैदा होता. हमारी तरह नर्ड्स नहीं है जो सेशन बाय सेशन है. ये जी फैमिली के साथ T20 देखने चले जाते हैं. मैक्सिमम 1 डे तो 3 घंटे की कमिटमेंट है यार, देख के वापस आ जाओ, खत्म हो जाए, शुगर लगता है. जो लोग टेस्ट क्रिकेट जो प्योरिस्ट होते हैं वो कोई भी नहीं जाता. आपने पूरी दुनिया में 7 मुल्कों में हाल देख लिया. यार श्रीलंका जिम्बाब्वे सीरीज टीवी पे नहीं आ रही तो बंदा क्या बोले इन चीज़ों को. इतने आप बनते. आयरलैंड को आपने इनको स्टेप चाइल्ड बनाया हुआ, थोड़ा थोड़ा खिलाते हो. अफगानियों को थोड़ा थोड़ा खिलाते हो. Make it 4 days for everybody, and you can do it over the weekend. 98 overs per day, इसमें क्या बड़ी बात है यार. That's what I'm saying. It's all about the overs. जो लोग कहते हैं जी weather condition ये कोई साइंस नहीं है. या आप अपनी बस जो पुरानी old wives tales है ना, urban legends, कि जो 5वें दिन पे बॉल स्पिन होगा, वो जितना खेलोगे उतना ही स्पिन होगा ना. Exactly. और that's where it makes the difference. और अगर 4 दिन के मैचेस होंगे, हो सकता है विकेट्स को भी डिफरेंटली बनाए. You might start producing more wickets that produce more results because आपको पता है कि ठीक है हमारे पास एक कम दिन है. ओवर बेशक मतलब दिन में ज़्यादा हो जाएंगे, 8 ओवर 10 ओवर जितने भी, बट अगर आपको पता है एक दिन कम है तो हो सकता है आप विकेट्स जो है कम बैटिंग फ्रेंडली बनाए, कम स्लो विकेट्स बनाए जिनके ऊपर जो है वो स्कोर्स भी लो या टाइम सबसे बड़ी बात है आपकी ये 2 टेस्ट सीरीज वाला चुतियापा तो खत्म होगा ना. आप 3 टेस्ट तो पूरे खेलोगे. एक क्रिकेट इन्फो ने एस्टिमेट किया था अगर ये 5 साल के साइकिल में निकालते 335 डेज वुड बी फ्री. उसमें आप और टेस्ट भी खेल सकते हो, उसमें आप लोग वर्कलोड भी कम कर सकते हो, उसमें आप एक इवेंट भी और करा लो और टूर करा लो, तो सबका ही फायदा है इसमें. तो why do you have this stupid रीजनिंग कि यार क्लासिकल फॉर्मेट ऑफ द गेम हर चीज को छेड़ चुके हैं यार. आई थिंक बस एक डर जो है ना वो तुम्हारी वाली बात के एक बहुत क्लासिक चीज को जो हमें बिगाड़ना नहीं है बिकॉज maybe it goes wrong. Again we're assuming all of these things are good for ये सब ये क्योंकि ये बॉलीवुड बार-बार ये रिबूट कर रहा है ना, इसलिए सारे खराब हो गए. I disagree with both of you on this actually. Okay. I think the 5-day format okay, you're cancelled. The 5-day format is sacred to the game, and I'll tell you why. And I know that the argument against this can be that the same moments can occur on the last session of day 4, but the best test cricket happens arguably on day 5. You see some beautiful finishes of the game, some hard-fought draws, some very close finishes, some close victories, some close losses. I mean, the Ashes 05 series is the reason why I still watch cricket.
A lot of the action happened on day 5. Now, I'm not saying that day 4-day cricket is a radical difference than 5-day cricket, but at the same time, the flaws with Test cricket are not the fact that it's 5 days. That's not the problem with commercializing Test cricket right now. The problem with Test cricket is that if I go to England, my ticket is £150 to see a day of Test cricket. The problem with Test cricket is that the pace of the game might be too slow because there's placid tracks of where I'm going to bat. The problem is not the 5 days. No, we're always changes need to be made to the game. The pink ball, I didn't oppose it one bit, but I oppose this because this is not actually the fault. You're picking out something that actually it might enhance the game, like you said, 335 days out of the calendar. That's an incredible stat if it's true. But what I'm trying to say is that this is actually not the prime cause of Test cricket failing in countries like Sri Lanka, because right now we saw the Boxing Day numbers are pretty good in Australia. English Test matches are usually pretty good in terms of attendance as well. So, and we're not even mentioning the fact that Test cricket has stopped being free to air TV in England and Australia, which are huge markets. So all of these other variables we're not even discussing, but what we are talking about is the fact that there's an extra day on the end of a game. That's why I'm not okay with this approach. यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तुम्हारी डे वाली आर्ग्यूमेंट ये क्या आर्ग्यूमेंट है इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ ओवर्स यू प्ले इन द गेम you cannot contextualize the game in terms of the movement of the sun उससे थोड़ी फर्क पड़ता है जो आप खेलोगे उससे फर्क पड़ता है you can have those moments on day 4 इसमें क्या बड़ी बात है you will still have that struggle my issue is by और वेदर की बात करते हैं ये लोग यार वेदर तो वैसे भी कंट्रोल नहीं करते पांच टेस्ट भी वॉश आउट हो जाते हैं अगर आप एक दिन खत्म करते हो जो हमारा पॉइंट है वो ये कि यार आप बाकी जो फैक्टर्स हैं एलिमेंट्स हैं जो एक मेंटल आपकी अप्रोच होती है गेम के तरफ कि यार हमने स्लो विकेट बनानी है जो डे 1 और 2 पे बैटिंग फ्रेंडली और 3 4 5 पे स्पिन हो maybe that will change maybe the way that the tracks are being built will be circumstantial based on the fact यार सबसे बड़ा वेयर एंड टेयर पिच पे होता है आप जितना उस पे खेलते हो सूरज से नहीं धूप से नहीं ये वो आप इसको क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते हाँ हमें इतना पता है कि हम 100 ओवर डेली खेलेंगे तो ये पिच खराब हो जाएगी तीसरे चौथे दिन yeah well listen what you're saying is not incorrect it's not incorrect और आप ये सोचो इफ आई आस्क यू यार मुसाद यू वर्क 9 to 5 तुम 4 दिन 6 बजे तक काम करो और 3 दिन वीकेंड ले लो व्हाट वुड यू प्रेफर कमिंग ऑन 5 days और फिर वो तो आप बॉस हो ना तो आपकी अलग बात है the conversation that I'm having is not about the fact that you guys were wrong. I'm just saying and the biggest we can't be wrong. The biggest pro is you will play more test cricket. इससे सबसे बड़ा इशू ये है कि हम दो टेस्ट यार इंग्लैंड न्यूजीलैंड क्यों 2 टेस्ट right now world cricket has more test matches than it ever has had before. Yes, but the fair share of those big 3 lie with exactly big 3 4 3 again you're missing the when point. was the last time Pakistan played a 5 test match series? That's not Pakistan didn't play a 5 test match series in a long time, but that's not because test matches are 5 days. That's because Pakistan that is because of it. No, that's because Pakistan is not generating enough revenue. तो क्यों नहीं हो रहा ना? To have a 5 match test series. तो फिर नहीं आ रहे लोग तो फिर क्यों खेलोगे 5 टेस्ट? If you think that the revenue is based on the duration of the game, and that's incorrect, I think. I think it will change. I think because it might enhance it. That's not the initial और fault. especially एशिया में आप डे नाइट करो लोग क्यों नहीं आएंगे यार मगरिब के बाद मैच देखने और ऊपर से बात ये है कि अगर आप 4 days की वजह से और ट्रैक्स चेंज होने की वजह से एक्साइटमेंट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं मे बी आफ्टर अ फ्यू मैचेस पीपल विल रियलाइज कि यार नहीं डेज 3 और 4 के अंदर जो है मैच के अंदर कुछ होता है हम आएंगे इस वजह से क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं अब बॉक्सिंग डे टेस्ट जो होता है 26 को होता है ये वो फिर मंडे को जाके क्लाइमैक्स हो रहा है ये 5वें दिन खाली क्राउड बैठा है और क्या मजा है इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो बात हुई थी कि वहाँ लोग आते हैं दैट्स मोर ट्रेडिशन देन एनीथिंग एल्स अगर आप बॉक्सिंग डे टेस्ट या अब ये जो 3rd टेस्ट के ऊपर पिंक टेस्ट होता है सारी चीज़ें होती हैं देयर इज देयर फॉर अदर रीजंस मोर देन द क्रिकेट एज वेल there is there because there's an environment where you know they can और उधर 150 साल का कल्चर भी चल रहा है यार there's a different aspect too. In the world, successful ones always have supplementary positives that go with it. For sure. The NFL halftime show or the IPL dancers. Because there's a structure to go with it. I agree. Yeah. There's tailgating in the NFL. There's things in the NBA. We don't have that. And I don't think we've seen that in the UAE because of the way that it's structured. You don't have things around it. And also in Pakistan. But what I do feel is if your match positioning changes, for example, you're having 4-day tests. They start on a Thursday and they end on a Saturday, Sunday, whatever. You will have more people who are inclined to come. And also day-night tests. Day-night to must into this as well. No, the day-night test is not even an argument. 100% agree with that. We saw the beta of that in India. It was a huge success. Yep. It was marketed very well. It needs to happen all over South Asia, all over the world. My argument here, and this is where we're going to end it because you guys are making some valid points. The only argument that I have is that if push comes to shove and the game needs to be truncated down to 4 days,
fine, I'll throw my hat in the mix and I'll say, यार if it's good for the game, fine, do it. My problem. मसला ये this mindset of truncate यार कौन से truncate कितना 30-40 ओवर में क्या फर्क पड़ जाता है. It's not even 1 hour per day. You just add it on 4 days. You will barely feel it. उन्होंने stats निकाले थे. Most tests don't go above 400 overs. 380, 388 over में match पूरा हो जाता था. We're missing two pieces of the conversation. And again, I was going to end this, but since you brought this up, one of the pieces of the conversation here is overrate and how you're going to manage overrates because they need to be tightened up and people need to be more efficient in that sense. The other thing is the entire cricketing fraternity, people that are playing cricket, almost none of them have advocated for 4-day cricket. They've all said test cricket needs to remain 5 days. And these are the gentlemen that are actually playing the cricket. So what's the difference between the thoughts that you both are coming out with right now and what this whole entire fraternity is saying? There's got to be some sort of, where's the fine line that we're missing? Yeah, that's a good question. That's honestly a good question. But we have seen that international cricketers, उनके वैसे ही क्या दिमाग होते हैं यार. They are not really, they are not part of. यार सचिन, यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सचिन तेंदुलकर कहता है 50 ओवर को ना 225 में डिवाइड कर दो. अब आप इनसे क्या पूछोगे? That is not the worst idea, but having 4-day tests is bad in your opinion. No, I don't think 4-day tests are the worst idea. I just think they're not the first thing to do to commercialize test cricket. There is no other way to save test cricket यार. It's a losing. कोई पैसा नहीं बनाता. हमारे पूरे tours क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि लॉस मेकिंग होते हैं. यार हमने देखा पाकिस्तान और ये जो लॉस मेकिंग होते हैं. हमने देखा है कि स्टेडियम्स खाली थे. पाकिस्तान खेल रहा था. Even though we know how much they hyped up Babar Azam, we know how much they hyped up our fast bowlers Naseem and this and that. They just couldn't generate enough. और बिग थ्री की बात नहीं. इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई थी, जो इंडिया ने भी उनको उड़ाया था. आपकी विनिंग टीम है, आपको पता है आप जीतोगे, तब भी ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था. नहीं होता है. That listen, all these points are valid, and if cutting down the game by a day makes these stadiums come alive, then so be it. Now we're going to leave the conversation here. यार फिर वही तुम cutting down a day. देखो अगर you are cutting down a day. मेरी बात सुनो ना, कितना cut down हुआ personally ले रहा है. आपने देखो average लगा लो 1 hour is 15 overs, ठीक है. You give 1 hour each day for 4 days. 15 times 4 60. आपके 30 ओवर कम हुए हैं. कौन सा दिन खत्म हो गया? That's the math is solid, Shwaja. You're still cutting out a day. That's what I'm saying. You're contextualizing the wrong element of time. Exactly. दिन उठेगा 5वां दिन. यार तुम कोई भी नहीं देखता. What's the point? मैं वही कह रहा हूँ एक mental aspect. ग्राउंड खाली है. वो देख कुत्ता बिल्ली बैठ के मैच देख रहे हैं. हम ही सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं. शायद थ्रिलर हो ये वो. It's not worth it, man. For sure. No, I get where you're coming from. And again, I'm going to reiterate that if this is the solution, I don't think it is. If this is, I'm in for it. I hope I'm proven wrong, like I was with Ben Stokes. अच्छा जी मिट्टी पाओ जी. ये बताओ कि ख्वाजा को तो डिमेरिट मिलने वाला है, रबाडा को क्यों मिला है? यार मुझे नहीं समझ में आता. नहीं यार, I'm sorry. यार he is getting right up in his face और उसके मुंह में चिल्ला रहा है. You can't invade a batsman's personal space. क्या मतलब personal space आउट हो गया, दफा हो? नहीं तो उसके मुंह में जाके क्यों खड़े हो गए यार? और ये पहले भी ये कर चुका है. ये पहले भी शोल्डर मार चुका है. यार देखो शोल्डर मारना इज डिफरेंट. मैं तुम्हारे सामने आके चीखना शुरू कर दूं तो तुम क्या करोगे? जो रूट तो विम पे कोई और होता है, बटलर वो तो चंबा करा देता उसको. ठीक है करा देता. तो जो उस पे भी आता गलत है ना. नहीं आप तब हम कहते हैं कि बैट्समैन के पर्सनल स्पेस में आप नहीं इन्वेट करना चाहिए. क्या पर्सनल स्पेस यार? क्रीज पे खड़ा और सबसे फनी तो जॉस बटलर को गालियां देने पे उन्होंने डिमेरिट दिया. किस बात का यार? उसको थोड़ा बैन करने में क्या बड़ी बात है? वही कह रहा हूं, थोड़ी सी फैट शेमिंग की खत्म हो गई बात. वो बेचारा भी अब फारिग हो रहा है सीरीज. फिलैंडर वैसे ही जा रहा है, वो भी इंग्लैंड जाके खेलेगा. उसको अगर मजा आए कि ये फुल सीमिंग पिच बना दे और इनको 7 विकेट मार के लिटा दे और सीरीज यार. उनका मसला है खिलाएंगे किसको? उनके पास जो अब ये बाकी के बॉलर्स उनके उसमें ब्यूरॉन हेंड्रिक्स टाइप कोई आ जाएगा मेरे ख्याल में. ब्यूरॉन को उन्होंने बुलाया टीम ड्राफ्ट किया. Who's not a very good bowler. I'm actually torn in terms of the decision. I think that it's a demerit. Like I think on the current laws, it is a demerit point very clearly. तो यार I think the current laws are flawed. नहीं वो स्ट्रेट बैन नहीं हुआ, वो डिमेरिट पे बैन हुआ. Because he's been carrying other demerit points. I understand that. Yeah, but देखो ब्रेट ली वगैरह ने भी सबने इसी चीज के बारे में ट्वीट किया था कि this look at where he's standing. It's fine. He's come up. याद है श्रीशांत वाला जो इंसिडेंट हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, जब जाके उसने पिच के सामने हाथ पीटे थे, सारी चीज की थी. My issue is that the guy's bent his back on a very flat track. Everything that he said, and Brett Lee said the same thing. It's a bit of passion. It comes out. It shouldn't be. अगर वो यही चीज अच्छा मुझे बताओ. क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम. नहीं खत्म करो. ये खत्म हो चुकी है. विराट कोहली जब से खेलना शुरू किया खत्म. कोहली को तो मैं 1000 दफा क्रिटिसाइज कर चुका कि ये बहुत बड़ा. That's the weakest argument right now that you've made. अगर रबाडा ने यही चीज 3 यार्ड
पीछे की होती. हाँ, it's fine. That's what I'm saying. You don't invade his personal space. Why is it okay? यार क्या हो गया यार? अगर वो विकेट के बाद जाके कर लेता. What Nasser Hussain has. He said context, 33-degree heat, high humidity, a flat pitch, not given the new ball, gets the England captain, best ball of the day, shows a bit too much emotion. The result is that he doesn't play the Wanderers test. यार क्या 33 डिग्री डे 1 वाले को 20वां ओवर होगा? नहीं यार ये नहीं यार मीन मिकटा निकालो ट्वीट की. मैं कह रहा हूँ result is that the Wanderers test is going to miss out on Rabada. Rabada's not missing out on. You're talking about. नहीं तो उसकी अपनी गलती है यार. There are no. You're talking about taking off an entire day, my favorite day of Test cricket. You want to cancel it? यार Pavel Nedved CL फाइनल मिस कर चुका है. रॉय कीन CL फाइनल मिस कर चुका है. जॉन टेरी CL फाइनल मिस कर चुका है. जॉन टेरी की तो कोई औकात ही नहीं है इन प्लेयरों के सामने, लेकिन चलो वो भी मिस कर चुका है. तो greatest defender in the Premiership. हाँ, but इसलिए उसने मिस नहीं किया था, इसलिए मिस नहीं किया था क्योंकि उसने रेफरी देखो मेरी बात सुनो, रेफरी के सामने या अंपायर के सामने जाके वो डिसीजन पे ऐसा चीखना चिल्लाना करे या फेस टू फेस आ जाए. डिसिप्लिनरी मैचेस उन्होंने ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए, फिर भी जाके I don't understand why. The last 10 minutes talking about how we need to cut off day 5 and compensate for the overs in 4-day cricket so that cricket can be more commercial. But you want to take out one of the youngest, quickest, most aggressive fast bowlers in the game because it's a gentleman's game. You don't see a flaw with that. He yelled a bit. वो बच्चा थोड़ी है, वो पहले भी बैन काट चुका है. आप क्यों नहीं सीख रहे? आप क्यों उसको उसके बैट पे एक सेकंड जब उसने बैन काटा था तो वो बिहेवियर compared to this was a different level, right? That was something else. वो right? Physical हो गया था, सारी चीज हो गई थी. You have to have contextual presence. If he's bowling यार जो भी celebration antagonistic होती है, we should stamp that out. नहीं तो उसको येलो कार्ड दे देते मैच के दौरान. इस किस्म की अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना ग्रीन और येलो कार्ड. That only encourages bad behavior कि सिर्फ येलो कार्ड दे रहे हो. येलो कार्ड के बाद मतलब ठीक है दोबारा वो उसी मैच में कुछ करे तो ऐसी बात हो. If he had gotten the wicket of the number 11 after his team had scored 600 and the other team were 200 for 8 or 9, then this is a ridiculous celebration. ये क्या बात हुई? This context that doesn't make any sense. Of course because it feels more personal. Either you ban it all the time or you don't ban it at all. ये क्या logic है? Are you saying that all wickets are equal? They are not equal, but that doesn't mean you don't judge them equally. क्या हो गया यार? All wickets matter. No. The problem that I see is that you're removing passion from the game. And यार passion नहीं, passion is what passion ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह में घुस के तुम्हारी माँ बहन कर रहा हूँ यार. That's not passion. यार माँ बहन की नहीं, वो सिर्फ चीख रहा था पागलों की तरह. Stupidity है यार. Passion is the greatest commercial asset that cricket or any sport has. Oh, please, and you want to demerit point it. For God's sakes. उसको पता है he did something wrong and he deserves to be punished. Even though I defended him when the last time when he got banned from, हमने कहा जी racism बोल दो छोड़ देंगे. But this was wrong. ये गलत था यार, उसके मुंह में घुस रहे वो. जो पहले यार मिस्कीन सा है. मुझे उस दिन क्या कहते हैं जो हारिस रऊफ पे भी क्रिटिसिज्म था उसकी वो स्टूपिड था. उसमें क्या है? नहीं but that's what I'm saying. I don't understand. This is not the same यार. I don't यार नहीं अच्छी है यार. क्या है? Whatever you do. इसमें क्या है? Kids are watching these sports. We don't have to bring violence. It's okay. There's nothing violent. वो उसके मुंह में घुस गया ना. वो वायलेंस नहीं है. वो एग्रेसिव नहीं है. वो एक गर्दन पे नहीं. That was fine यार. But that's what I'm saying. उसके बाद हमने उसके ऊपर whatever. It's a global. We'll get to global Haris thing. Rauf. Whatever. We want to talk about Haris Rauf. But the last statement on Rabada is that as per the rules, yes, he deserves a point. Yes, the ban is in place. I have an issue with the rules. I think you're penalizing passion, and you should never penalize passion in sports. You know when he comes back, you know what he's going to start doing? Either not celebrating, तो ना करे, or he's going to adab. भाई तुम इतने बड़े बॉलर हो दुनिया के, तो you don't need to be celebrating. Why, like man? a It comes out internally, यार. Act like you've been there. I know, but it's in that moment. कितने बड़े बॉलर उससे पहले भी आए हैं जिन्होंने बातें की हैं, बकवास की है. वो मैग्रा सारवान वाली बात हुई थी. मैग्रा was wrong there. Right, but that escalated to a different level because. तो ऐसे ही होता है ना जब आप किसी के मुंह में घुसो, ऐसे ही होता है. वो भी आगे से घुरी करा देता है, उसको खत्म हो जाती बात. क्या मतलब बैट घुमा देना. यार वसीम भाई को ने कभी ऐसा किया, वकार ऐसे करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं. चीखते चिल्लाते हुए जा रहे होते थे. चीखता चिल्लाना is one thing, उसके मुंह में घुसने की आपको जरूरत नहीं है. क्योंकि तब तक बैट्समैन खुद जा चुका होता था. एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉच, ये ब्रेटली वगैरह, ये कुछ भी नहीं. You didn't need to get up in the guy's face, in his grill, you know. अच्छा यार आप बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की. We have our resident Qalandars fan. Are you a little bit optimistic? Are you feeling a little Linsanity, a little Haris Rauf action? 14 wickets in the BBL so far. 16, right? 2 और ले ली. 16 wickets, an average of less than 15. I mean, the last 2 games have been a bit iffy for him. He's gone for 10 and over. अब तो वापस आ गया है. But yeah, he's now in Pakistan. But before that, he's अच्छा हाँ मैं भी को phenomenal. Ripping through batting. यार the thing is he is a quality bowler, no doubt. आप उसकी पेस भी देख रहे हो, 147 6 मारा है. But to be frank, BBL का स्टैंडर्ड क्या है यार? Honestly, I don't think it's a टुंडा लीग है. मुझे I don't rate their batsmen or their bowlers. जहाँ स्टॉइनिस जैसा प्लेयर जो 20 रन नहीं बना सकता इंटरनेशनल में, वो उधर आके हीरो बना. वैसे इंग्लिश प्लेयर्स
in the BBL are struggling so far. There haven't been exceptional performances, save one or two from Phil Salt. A little Banton action as well. Exactly. Tom Banton. I don't believe the standard is that great. But standard नहीं है. लेकिन Rauf की the best thing about it is the strategy behind his bowling. Yes. That's very good. यार जब उसने हैट्रिक ली थी, he was bowling off cutters. उसने फर्गसन को आउट किया था, ऑफ कटर पे आउट किया था. और आपको एक जो फैक्टर आप उससे एलिमिनेट नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी लीग वो फिर भी है, वहां जाके नेशनल लेवल पे आपको परफॉर्म करना. और जिस किस्म के यार उसके बाद वो जो एक लेजेंड जो उसके निकल रहे थे कि बैट्समैन नेट्स में फेस नहीं करना चाह रहे. मैक्सवेल कह रहा है कि भाई हाँ, मैक्सवेल कह रहा है मुझे पता ही नहीं लड़का कौन है. अगले ने जो है वो गली क्रिकेट खेल रहा था बेसिकली, उससे उठ के आगे संडे लीग से. मसला ये सस्ता नैरेटिव बन गया कि जी बीबीएल ने पाकिस्तान को एक प्लेयर दे दिया, वो अलग आप बात उसको सेलेक्ट कर लेते श्रीलंका के लिए, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ले जाते. यार देखो ख्वाजा, सिलेक्शन पे नैरेटिव्स के पीछे सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए. ही इज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन टास्मेनिया एज वेल. No, and this is the मैं thing. यही बता रहा हूँ कि हमारा नुकसान हुआ कि ये नैरेटिव चल गया जी ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चा नैरेटिव से क्या नुकसान है? वो आके पाकिस्तान यार नुकसान ये कि लाहौर कलंदर और पाकिस्तान टीम और उसको लेके चल रहे हैं हम 2 साल से हर देख रहे इंटरव्यू हैं. में लाहौर कलंदर और तुम्हारे फेवरेट आई एम नॉट सेइंग लाहौर डिजर्व्स क्रेडिट, आई एम सेइंग कि जी गोरा Are you not saying this though? गोरों ने हमारे पहचान लिया है. दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हम आपके क्रिकेटर को बना रहे हैं. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट ईदर. यार इन गोरों ने यही बेचा कि जी मिस्कीन आमिर था ये वो. दैट्स व्हाट आई don't disagree with you on any of that. My only point is कि अगर उसने यहाँ नहीं खेला होता ना बीबीएल में और उसको इसी तरह हम इग्नोर करते रहते तो तब ज्यादा ज्यादती होती. दिस इज गुड फॉर हिम बिकॉज ही गॉट टू स्टेप इन द लाइमलाइट. पीपल सॉ हिम, एकदम से रिकग्निशन मिली कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके एक पाकिस्तानी बंदा संडे लीग खेल रहा था टास्मेनिया जहाँ भी आके. नाउ ही इज बॉलिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स एट एन इंटरनेशनल लेवल ओकेजन. He can do it. और अब अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे अब जाती है. HKJ is reminded us of the time when Saeed Ajmal took a wicket and yelled. I think I remember that. I remember when he was quite aggressive. पता नहीं किसकी विकेट यार सब करते थे यार. मैं आज यार येल वेल करने में मसला नहीं है. It's just you don't get up in the face of the guy. यार अब तो देखो अच्छा येल के अलावा अब तो इशारा करने में भी कि जी आप उसकी तरफ चले जाएं. That's a bit silly. I think that's my point is if you point the batsman towards the लेकिन ये तो काफी अरसे से है ये रूल. मुझे तो फुटबॉल में भी ये शर्ट उतारने का येलो कार्ड समझ नहीं आता क्या. और तब स्पेशली जब नीचे मैसेज लिखा होता है कि यार RIP XYZ मतलब उस पे येलो कार्ड. पता नहीं किसकी डेथ हुई थी and the guy's like has crying. a really sad shirt and he's really sad and the referee's just like here's the fucking yellow card as well. Just like so वो अगला भी कह रहे हैं यार sorry I have to rules में जो भी हो penalize passion, but again we won't fall back into that. Haris Shroff is back into the Pakistan side. Marcus Stoinis has scored 149 out of 73. The Stars are doing great. Sydney Sixers, my team, are in second place. It's been a long ass BBL season already. Khwaja, you're not a big fan of the league. यार I cannot watch any franchise. प्लेयरों के लिए मैं नहीं देख सकता. पाकिस्तान टीम हो कहीं then I can watch that. टीमों को मैं देख सकता हूँ, टीमें but individuals के लिए I don't enjoy. मैं BBL में जितने मैचेस हो रहे थे ब्रिस्बेन हीट के वो मैं रिलीजियसली देख रहा था जब तक टॉम बैंटन था वहाँ पे क्योंकि I really enjoy watching him bat. And this kid can play. He can play and I think when he comes to Pakistan, if he doesn't get his fair chance in the PSL के लिए जाती है क्योंकि उस लड़के में बहुत टैलेंट है. That's a demerit point. पाकिस्तान में ट्रू पिचेस मिलेंगे तो उसने बहुत मारना है यार. जिस तरह की पिछले PSL में थी exactly. I hope कि इस तरह का सीन हो. We have the replay of Ajmal screaming in Watson's. Yeah, lots of people do this. Yeah, this but that's I think right now that's a demerit point. Why? Right? No. I'm not saying it's correct, but on the law. Demerit point right तब था जब माइकल क्लार्क जैसे लोग कह रहे थे get ready for a broken arm. Yeah. That's the kind of stuff that gets me riled up. Like, why are you saying those kind of things? यार जो स्टंप माइक वाली चीजों पे तो बैन लगाना बहुत स्टूपिड है. अब आप क्यों लगा रहे हो प्लेयरों के और वैसे भी साउथ अफ्रीका में सीरीज होती है तो स्टंप माइक्स आर अपेरेंटली high definition because you can pick up everything. जितनी बातें कही हैं बटलर ने सारी हमें पता है रट गई हैं हमें. Exactly. Anyways, I want to talk about the kind of wickets that Haris got. Now, most of them, it looked like they were mediocre batsmen that he was beating for pace. Purely beating for pace. Now, I don't know when he's going to bowl 155 to international level batsmen. I reckon they're going to be able to pick him off a lot easier than the domestic standard of the Australians. But let's see what happens when it comes to push. नहीं, he will perform. इसका issue नहीं है. He's an intelligent bowler यार. वो I think he is much more ready than Naseem, Hasnain वगैरह. And carrying this hype of you can bowl 155, the batsman has it in his mind. So even when he's facing him for the first time, he doesn't know how quick he is off the wicket, doesn't know how quick he is in the air. That will change. और especially यार सच्ची बात है बांग्लादेश में they haven't produced bowlers who are bowling at that speed. So it will be a test. Close for a while and then that was it.
let's talk about, before we get into the Pakistan team, the Ireland blitz against the West Indies. I think we were chowing down on some burgers when that was happening. 100 runs in what, 8 overs or 7 overs? 93 runs in 6 overs. There was one of the highest power plays ever. And they end up winning that game. They should have won the ODI before that as well. That quite controversial. They lost by a wicket. Yeah. And they finally beat the West Indies. And again, that doesn't mean that the West Indies won't win the T20 World Cup. They have all the chance of still doing so. But it's good to see Ireland. यार मैं तो हैरान हूँ कि केविन ओब्रायन जो उनका स्टार ऑलराउंडर वो ये अच्छा खासा एक डेकेड प्लस इंटरनेशनल करियर बना गया है वो 2007 आई थिंक से तब से खेल रहा है उसमें हमारे खिलाफ and he's still playing and he's still smashing and he's still 2011 की तो मैं 2007 में exactly World Cup में खेला था with his brother now the commentator for this series but यानी 2005-6 से वो रेगुलर खेल रहा होगा exactly but अब जो आयरलैंड में एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि they're developing those batsmen and those bowlers over a longer period of time मैं कल के मैच था परसों का मैच था जब सेकंड T20 वॉश आउट हो गया they ended up winning the T20 series by the way because of the washouts but उसके अंदर एक डिलेनी बैट्समैन खेल रहा था हाँ वो भी अच्छा 4 sixes in over against Hayden Walsh the guy who we were hyping up the other day but he looked like the kind of guy who could make an impact in T20 it's so very good sign यार these kind of moments and you know I think in the future someone mentioned this before मुझे तो लग रहा है आयरलैंड की हमारे साथ 3 मैच टेस्ट सीरीज पड़ गई होना चाहिए उनको बुलाओ I mean do you remember that Ireland when we played that single test match in Ireland there were first innings follow on करके वो sessions we were struggling so I think they're gonna वो लिटा देंगे किसी टीम को ऐसे ग्रीन विकेट for sure if Bangladesh tour Ireland I think Ireland have यार बहुत चांस है अभी उनका unfortunate सिर्फ एक ये सीन है कि they're facing some issues in terms of domestic their own structure of the Ireland Cricket Board they've had money pull out they've had some series that have been dropped because they don't have enough money to support the grounds and make the payments and things like that if I recall correctly so we as a cricketing fraternity, Pakistan being the kind of nation that struggled itself, we should invite them when we have these kind of seasons and opportunities. It will be a good thing for Pakistan cricket as well because we are getting more teams to come in, and then Mushfiqur will maybe. And there should be a mandatory rule. जो भी team English summer tour कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया वो I think है. एक टेस्ट और 3 T20 ऐसे कुछ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी खेला था पहले भी खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ again Pakistan have a very rich history of helping teams grow और अब तो टेस्ट मैच है तो भाई टेस्ट मैच तो सीरियस लेते हैं एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो होना चाहिए Before at the start of this year we did something special we put together what was called the Pakistani Performance of the Decade we had some incredible responses some phenomenal responses and then we had a decoy takeover from Indian fans that were pushing out the CT17 performances but the ultimate equalizer ended up being that Fakhar Zaman's 100 in the CT17 final versus Muhammad Amar's 3 for in the CT17 final and Muhammad Amar's 3 wickets won that bracket for us and so as listeners of Change of Pace, as voters of Change of Pace, they decided that in the past 10 years, the greatest performance by a Pakistani cricketer, individual performance by a Pakistani cricketer, was Amar's 3 wickets in the CT17 final. Now, my personal choice was Abdul Razak's 80 against South Africa. Can I get your thoughts on that? Yeah, the sad thing is कि globally उस innings को कोई recognition ही नहीं मिलती क्योंकि हमारे narrative ही कोई नहीं यार लिखे थे बट उस तरह नहीं मिलती जिस तरह और बहुत सी चेसेस हैं जिन पे इस किस्म की परफॉर्मेंसेस सिंगल हैंडेडली विराट कोहली तो 30 भी मार दे उस पे 5 आर्टिकल आ जाते हैं उस बंदे ने 109 मारे 72 में in a must win match do or die in a और फिर भी लेकिन But what do you make of that performance? What do you make of the results of the polls that we did? And what was I think there was a recency bias. Yeah. I think there was a recency bias. हम miss you era में काफी performances भूल गए हैं. Also, I feel some of the matchups became really difficult for the audience as well, even for us. मैं फिर उस बात पे आऊँगा and I know people don't agree. A 200 is a 200. यार देखो 200 जिसके खिलाफ भी बनाओ कितनी बनाई है आज से पहले पाकिस्तान के लिए कितनी बनाई है ग्लोबल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की जो गई गुजरी टीम 200 तो बनाई ना एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर वाली टीम होती तो चलो ठीक है लेकिन तो हमने उससे पहले भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है इन शिटी सर्कमस्टेंसेस हम उनके साथ जो टेस्ट मैच हार गए थे कुछ अर्सा पहले माय पॉइंट इज 200 रन बनाना किसी भी ट्रैक पे किसी भी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल where do you want to put it I think it's one of the top 5 performances that we had and it didn't even make it past the first round my point is this my point is it didn't get that recognition because recency bias it was up against something great recency bias because it was Babar this is my point Babar in New Zealand so if you have guys like Babar and Amir and even Fakhar for a CT17 performance they will basically outshine or outrank a lot of other performances also because Babar's 100 got you 2 World Cup points when you needed them
Fine. And a Zimbabwe win, I as think great as it is, Azhar's, I know it was meaningless I think in that Azhar's sense, double but- hundred and triple hundred. वो तो यार चलो फ्लैट डेक था यूएई में फिर वही बात हो गई यार, देखो, मेरी triple बात triple सुनो ना also. मेरी बात तो पूरी होने दो अजहर का डबल 100 इन ऑस्ट्रेलिया MCG बॉक्सिंग डे दैट्स अ वेरी बिग ओकेजन और एक यूनुस खान के हम वो जो उसने ऑस्ट्रेलिया को ट्विन हंड्रेड्स मारे थे उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था Yeah, उसको बहुत डिजर्व even करता था Afridi वाली जो performance थी against West Indies, it's one of the greatest. World Cup one? No. The one day one. The Yeah, one day but- one, statistically, it's one of the greatest but ODI that was an performances awful of all pitch time. it was a very bad pitch. Fine. Regardless, he made that 75. He took those 7 wickets. It's hard to discount someone when he does that in both innings of a match. Yeah. हम Ben Stokes की बात करें Everybody's impact playing on के the बारे same में. pitch, by the way. Exactly. अच्छा So लोग वो those kind शारजा of वाला things- भूल गए 75 और 5 उसको Exactly. ज्यादा हाईलाइट जिसके होना अंदर चाहिए श्रीलंका था। के खिलाफ when Russell Arnold had those famous words, prayers won't help you now. that was a those very kind big of things match. we forget because of the recency bias, I think. and of course वो ट्विन हंड्रेड्स जो इंडिया को मारे थे वो भी बहुत ज्यादा उनको ट्रैक्शन मिल गई Yep. that did it बल्कि we didn't nominate Nasir Jamshed's hundreds, but he had them. वो तो चलो कंट्रोवर्शियल Yeah, बट दोस हाँ. वर फ्लैट डेक्स ना हफीज भी 100 मार रहा है वो भी उसके 100 अंदर मार हमने रहा है हसनैन की हमने हैट्रिक नहीं इंक्लूड की. The thing is, weirdly enough, Pakistan cricket produced a lot of great moments that even for us, when we were listing them down, we started to realize how much has actually happened for Pakistan cricket, even in a decade which wasn't very remarkable, except for that we had the CT17 win. CT17, we had the semi-final of 2010 T20 World Cup, we had the यार which वैसे was हम बात something करें we're तो not ये gonna talk डेकेड about. अच्छा नहीं था हमारे लिए अच्छा था डेकेड नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग सिटी अच्छा था, but वर्ल्ड कप में it थोड़ा was marred by controversy. It was वो तो marred, हमेशा ही है ना yeah, and it was also marred by the fact that we had this expulsion from our own home. इट वाज बेटर was देन the roughest, right? दैट That was वाज the वेरी roughest. that changes That the यार was आप rough. ये सोचो अगर कोई और टीम ये 10 साल भुगती तो उसका क्या बनता यार sure. उसकी टेस्ट स्टेटस चले जाता. हाँ मैं खत्म हो believe जाती करता हूँ कि उसका test वेस्ट match इंडीज वगैरह होती वो तो तहस नहस हो गए And again, we give a lot of shit to our fan base. At least not on Change Pace, but other people give a lot of shit to the Pakistani fan base. But I want to credit our fans for this because we showed up in Dubai, we showed up in Abu Dhabi, we showed up in Sharjah. We kept Pakistan cricket alive on the internet. We kept it alive through memes, through talk shows, wherever possible. We were always buzzing. And I know that 2015 World Cup was a very average World Cup, 1-for-4 against the West Indies. Goodness me, one of the worst nights of my life. But the point being, we're always there in bouts. Even in this 2019 World Cup was fine margins. If we had played that game against Sri Lanka, we may have been playing that semi-final. अब बस यही बात है ना कि द नेक्स्ट 3 years फॉर पाकिस्तान क्रिकेट आर वेरी वेरी क्रूशल क्योंकि 2023 में हमारे ये सारे प्लेयर अपनी प्राइम में होंगे Yes. एशियन वर्ल्ड कप है Yep. और ये बाबे हो गए होंगे कोहली शर्मा वगैरह सो इट्स अ वेरी बिग That अपॉर्चुनिटी is फॉर a अस good टू विन point. वर्ल्ड कप I've never thought of this before, but that is a good point. 23 इज एन एब्सोल्यूट लास्ट चांस क्योंकि इनकी विंडो ये 15 और 19 थी Right. अब कोहली भी पास्ट प्राइम हो जाएगा तब तक आई होप और I अपना don't think बाबर so, तो विल but बी इन Rohit हिज there प्राइम maybe, यार but अच्छा Kohli is too fit. और इंडिया पे भी अभी एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि अंडर कोहली एंड ओवर द लास्ट आई थिंक 3 or 4 वर्ल्ड कप्स they bad haven't knockout. exactly they haven't gotten to that level हाँ. yet. So India have a point to prove. A lot of teams here have a point to prove, but हम अब एक दोबारा एक era के अंदर आ रहे हैं where the superstars of yesteryears for each team, by the way. Yeah. New Zealand had Ross Taylor for a very long time. He's gone now. Yeah. South Africa उससे had छोड़ Hashim दिया अब या Amla. नहीं छोड़ी अभी तक नहीं छोड़ी, but But you know he's not he's gonna play getting to that 23. level. Hashim Amla, AB de Villiers, Faf du Plessis, who is now being rumored to retire very soon. You know, Yeah. all of these teams are starting to lose players. Steve Smith is also past his 30s. By the 2023 World Cup, he will be hitting 34, 35. There's a lot of gaps. I think England might be one of the only teams that has such a young squad still. Well- but Pakistan has that opportunity if बहुत we बड़ी develop a opportunity few है. more But I players also in think terms of we're batsmen at least. Slightly discounting Indian batting talent. Yeah, I कौन don't है think यार Shreyas Iyer, Rishabh अबे यार, Pant. ये सब आएंगे उनके IPL पास के भी लिए. आएगा and they That have a inning lot that of was played domestic talent. yesterday by the kid, 50 odd, he scored with alongside Kohli. What's his name to finish the game yesterday? श्रेयस ही था श्रेयस भी था उससे I पहले understand that केएल those- राहुल ने भी जो सेकंड मैच अबे था उसके यार, छोड़ दो अंदर ये 80 सब ऑड मारे. यार बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कहीं ना कहीं से निकालते ला रहे हैं बिकॉज उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है. आईपीएल से भी उनके पास आ जाता है कोई ना कोई एक्सपोजर. उनके पास कौन जो है है मैं यही तो पूछ रहा हूँ कौन है श्रेयस अय्यर वगैरह वहीं से आए हैं सारे. तो ये तो- केएल राहुल वहीं से आया है. पृथ्वी यार शॉ जो है, मनीष उसको भी पांडे को अभी निकाला तक था. लेके चल रहे हैं ऋषभ पंत को जितनी गालियां पड़ती हैं शायद ही किसी हाँ. इंडियन प्लेयर को पड़ती है बट माई पॉइंट इज कि वहीं से उनका टैलेंट रिकग्नाइज हुआ था बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स के खिलाफ खेला था. अब जाके वही लड़के अभी कितने मैचेस हुए यार 10-10 20-20 मैचेस खेले हाँ, कुछ भी उन्होंने. नहीं. टाइम लगेगा उनको. देखते हैं, overseas पे depend करता है. That's where India becomes If you dangerous remember again. Virat's career trajectory, nobody would have predicted this after his first 20 games. India persisted, and I think Pakistan need to learn.
there's one thing that and again I'm not a big fan of talking about Indian cricket this much, but there was this one snippet from his press conference yesterday from Virat Kohli. He said that in the years gone by, we've always made this mistake of rushing to select and rushing to make changes. But this team is learning to accept the players that we have and not keep changing the group. And I think Pakistan need to learn that too, because we shuffle and we mix and we've brought back Malik and Hafiz. यार that's a very disappointing coaching decision, to be quite honest. Misbah deserves a lot of flag for this. यार आपको पता है वो they are guaranteed failures in ICC events. आपने देख लिया उन्होंने CT17 में भी कुछ नहीं किया, 19 में भी कुछ नहीं किया. मलिक तो है ही. हफीज तो सबसे बड़ा फेलियर, उसके वर्ल्ड कप भूल गए, कुत्ते की तरह आउट हो रहा था हर मैच. ये वाला वर्ल्ड कप पर CT17 he was effective. What did he do? फाइनल में यार 50 मारे थे यार, क्या हो गया? 300 पे 4 आउट है और आपने 5 ओवर मारना है, ये तो कोई भी कर सकता है. I agree, but फिर बात उस पे आ जाती है in terms of depth in Pakistani cricket. I feel कि अभी तक कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग न्यूज़ या परफॉर्मेंसेस नहीं आई डोमेस्टिक लेवल पे जो लोग वाकई कहें कि नहीं यार ये नया लड़का है, इसके साथ शदीद ज़्यादती कर रहे हैं आप लोग, वापस ना ला के. हम क्या कहते हैं, अच्छा शोएब मलिक हफीज़ नहीं आएंगे तो यार अहमद शहजाद उमर अकमल को दोबारा ले आओ, देखो अहमद अफजल फ़ौरन मुड़ा. हम उन्हीं 10-15 लोगों को जो बुड्ढे ठुड्डे जो ट्राइड टेस्टेड हैं उन्हीं को घुमा फिरा के वापस ले आते हैं. कामरान अकमल बैठा रो रहा है कि जी मैंने इतनी परफॉर्मेंस की. यार तुम 38 साल के हो गए हो, खत्म करो, बस करो. तो यार वो नहीं उसका टीम में आना, स्पेशली आपने आ जाएगा ना, तो अब आ जाएगा. अगर मलिक और हफीज आ रहे हैं तो आई थिंक उसको भी वो चांस दे देगा यार. लेकिन मलिक और हफीज किस बेसिस पे आ रहे हैं ना, कुछ किया भी कुछ नहीं है ना उन्होंने. हफीज ने क्या किया? हफीज ने वैसी रोंदी डाली है बस. वही बात है ना. अच्छा मजे की बात है, उसने स्टेटमेंट दे दी कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो जी टीम में आ जाओ. This is the way to get in the team. आपको याद हो कि शोएब मलिक पिछले 3 साल से कह रहा है मैं सिर्फ ये वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ. शोएब मलिक भी इसी तरह 38-39 यार. Remember my rant after the India game that please stop using Pakistan cricket as your retirement home. Exactly. Stop using international cricket as a fucking retirement. मजे की बात है, धोनी नहीं रिटायर हो रहा, उन्होंने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, तब भी नहीं वो छोड़ा, इतना डीट है. I think it's a These guys are South Asian thing है. मैंने आपको बोला है ना, ऑफिशियली अभी तक यूसुफ और रजाक भी रिटायर नहीं हुए यार. ऑफिशियली हम उस चीज के लिए अभी भी चांस है रजाक आ सकता है, ऑलराउंडर. हम भूखे हैं ना वो लाइमलाइट और वो फेयरवेल और स्वान सॉन्ग. इमरान नजीर यार अभी तक खेल रहा है बेचारा. आई फील बैड फॉर हिम. पीएसएल में कमबैक करने वाला था वो. पीएसएल ड्राफ्ट में हर साल नाम दे देते हैं अपना यार. Well, let's talk about the fact that Hafiz and Malik have come back, but they've also made way. They've come in for people. So Fakhr is out and so is. फखर का तो बनता था ड्रॉप होना, बहुत देर से गंद मारे, लेकिन मसला ये कि आप रिप्लेसमेंट भी क्या लाए. आसिफ को भी ड्रॉप कर दिया. Wahab Riaz has been dropped. Wahab और आमिर is another topic. Managing a workload issue. कौन सा workload? Bowling consistently in the BPL. तो किसका बंदा अपनी मर्जी से कर रहा था. Exactly. I don't think Pakistan are going to go. It's a political decision. I don't think Pakistan are going to go down under without Wahab. Especially with his new. I think वहाब का चांस है कि वो ना जाए. आमिर को तो सेट यार, बट मुझे समझ नहीं आया क्यों निकाला आपने. मुझे यही समझ नहीं आता, अगर आपका T20 वर्ल्ड कप ईयर है, आपके पास 5 या 6 सीरीज हैं इंटरनेशनली, तो आप उनको अगर प्लान कर रहे हो खिलाने का, तो क्या करना है, आखिरी सीरीज में ले जाना है आपने उनको. Let me ask you something before we go onto this photo that the juniors pulled up. The fact that you've chosen not to play Test cricket, should that reflect on your T20 selection? I don't think it necessarily should. Is it? It is in this case. Yes, it is for sure. It is for sure. They can't accept the fact यार इतना यंग आदमी है, उसको हमने इतनी जिद्दोजहद के बाद हम उसको टीम में वापस लेके आए, इतनी हमने बातें सही सारी इतनी की भी नहीं, उसने 5 साल पूरा बैठा ही है. जो भी किया, मेरा मकसद कि उनको ये था कि यार ठीक है, we're bringing someone back. हाँ, जितनी भी हमने बातें की, सारी चीज की. आप the struggle was when he came back. नहीं, अब the struggle is real. अब सबसे प्राइम एग्जांपल इसका इस वक्त ये है, वेस्ट इंडीज के अंदर ड्वेन ब्रावो ने अपने बोर्ड के साथ फड्डा किया. राइट, बोर्ड ने उसको निकाल दिया, उसने कहा ठीक है मैं नहीं खेलूंगा. उन्होंने कहा आप पिक करें, या तो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें या आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कमिटमेंट दें. पॉलार्ड को भी उन्होंने क्या किया, एंड में क्या हुआ, पॉलार्ड कैप्टन बैठा है, ड्वेन ब्रावो वापस आ गया टीम में. वो आयरलैंड के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है. तो आप थूक के क्यों चाट रहे हो, प्राइम ईयर्स क्यों लोगों के जाया करके, उसके बाद वो 30-35 साल पे नाम पे आप दोबारा उठा के लेके आ जाओगे, क्या फायदा. ड्रे भी अब आ जाएगा वर्ल्ड कप तक वापस. Exactly. My thoughts on this is that if somebody is refusing to play one day or Test cricket, they do not deserve a central contract. But they should not be barred. First of all, you should have red ball and white ball central contracts. Okay. It's illogical to keep category ABC. एक तो उधर लोग मुफ्त की कंट्रोवर्सी बन जाते हैं, ओ यार शफीक सी में क्यों है, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उसको ए में डालो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप अपना सिस्टम रद्द करो और व्हाइट बॉल रेड बॉल रखो, सिंपल रखो. That's actually a good point. और सेकंड बात यार, हमने उनसे काम लेना है. उनको तो क्रिकेट मिलती रहेगी. वो तो दुनिया जहान की फ्रेंचाइज खेल लेगा, आमिर द 100 खेल लेगा, BBL खेल लेगा. ये वो
यार ठीक है उसके रेड बॉल में नहीं लग रहा तो हमने अपनी क्यों उस पे अना की जंग क्यों बनाई? If you're Muhammad Amr, what do you want to do? You want to play 4 or 5 leagues a year and then show up for the T20 World Cup? यार as long as he performs for Pakistan, who cares what he wants to play? यार I'm not saying it's wrong. I'm saying that's what you want to do. इंग्लैंड में भी आदिल राशिद ने जब ये कहा था कि मैं रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ या आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम इट, उन्होंने फिर भी उसको उठा के स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया था. ही सेड आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट. दे आर लाइक नहीं भाई, यू आर स्टिल द बेस्ट बॉलर, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट यू. द पॉइंट इज इफ ही बाईपास दैट ऑल टुगेदर, वो कहता नहीं मैं टेस्ट में नहीं वापस आना चाहता, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट इफ ही स्टिल द बेस्ट स्पिनर दैट दे हैव इन द लिमिटेड ओवर्स गेम, why is it आप stopping अपने them? पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो यार, क्योंकि हमारे पास न्यू बॉल बॉलर सिर्फ 2 हैं पाकिस्तान में, शाहीन और आमिर बस. और अब आमिर को आपने बिठा दिया, अब आप किसको हसनैन को दोगे न्यू बॉल? और ऊपर से यार आपका एक्सपीरियंस जो है इस वक्त, आपके पास जो नए लड़के खेल रहे हैं, यू नीड समवन टू गाइड देम एज वेल, राइट? आपके पास बेशक उसकी पेस चली गई है, बेशक वो स्विंग उस तरह नहीं करता बॉल को, बट एक्सपीरियंस के लिहाज से ही इज द मोस्ट सीनियर बॉलर यू हैव. There's no part of me that agrees with dropping Amr out of the T20 squad at any stage. He's good with the new ball and he's good actually in the मसला ये आधे लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ ये रिस्पेक्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देते, खुद इनको कोई टेस्ट मैच देखो कोई जाता नहीं है, स्पेशली ये जो केसीसी माफिया टाइप है, फिर आगे कराची पे टेस्ट मैच देखने fourth सही है ना. बड़ा आपको जुनून है ना 5 दिन की क्रिकेट के, जाओ देखो 4 दिन उधर बैठो, क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट देखते? फिर आमिर ने छोड़ दी, हाँ ये क्या बात हुई, आमिर ने क्यों छोड़ी? हम तो आए उसको देखने, कोई आता कोई नहीं है कक. यार देखो हमने पहले जब डिस्कशन में बात की थी कि यस इट सीम्स लाइक अ वेरी सेल्फिश डिसीजन, स्पेशली बिकॉज बहुत यंग आदमी है अभी, he has a lot of time left in terms of cricketing. यार उसका टारगेट हो गया ना, मैंने 2 वर्ल्ड कप और खेलनी है. You can disagree with his decision not to play test That's what I'm saying. and still say he should be in the T20 This is exactly what I was coming to. We said कि यार ठीक है, it seems like a bad decision and all of that. However, it should not be the implication for him not being picked in T20. Exactly. Why is this the criteria? 100%. अब क्योंकि मुशफीक नहीं आया तो आपने क्या आमिर को ड्रॉप कर देंगे जी, हम भी एक बंदा तुम्हारे लिए बिठा देते हैं, खिला देंगे, कोई मसला. वहाब तो चलो आई डोंट माइंड बिकॉज़ आई डोंट सी हिम एज अ T20 बॉलर. हमारे पास pretty effective. He's got a short ball. He's very quick as well. नहीं, अगर आप उसका ओवरऑल T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखो इतना खास नहीं है, बट डोमेस्टिक लीग्स की वजह से एकदम से वो एक यू नो दिमाग में बात खनकती है कि यार क्यों नहीं PSL में हमेशा विकेट ले जाता है, बट यू हैव बेटर ऑप्शंस, यू हैव बेटर ऑप्शंस नाउ, यू हैव क्या नाम है इसका? दिस इज द डिफरेंस नाउ इन पाकिस्तान टीम कि आप ड्रॉप करने के बाद ये नहीं हो रहा कि आप अपने आप को जो है बहुत ज्यादा यू नो डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं. एग्जैक्टली, फास्ट बॉलिंग टैलेंट आपके पास दोबारा वापस आ गया है. यू आर गेटिंग गाइज हु आर स्टिल 16-17 who are being selected in the national team, which is a good sign for Pakistan when it comes to that 2023 World Cup as well. और प्रॉब्लम ये है, एक और प्रॉब्लम ये है मलिक हफीज़ के आने से है कि यार इफ्तिखार को पूरा चांस नहीं मिलेगा, खुशदिल शाह को पूरा चांस नहीं मिलेगा, और यार तलत को भी आप ले आते हैं, उसने क्या बुरा किया इन द नेशनल T20 नेशनल, ही मेड मोर रन्स देन इफ्तिखार, ही मेड मोर रन्स देन एहसन अली एंड मलिक एंड ऑल दिस गाइस. और यार अब मलिक और हफीज की वजह से एक और चीज हो जाती है कि आपके बहुत से बैट्समैन आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे. अगर खुशदिल या रिजवान का फिर क्या रोल रहेगा? एग्जैक्टली, अब आप दोबारा उसको रिजवान को सरफराज वाली जगह पे डालोगे, बिकॉज इन दोनों की वजह से और आपका टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा सा स्लो होने की वजह से यू डोंट नो वेयर ही कैन बैट प्रॉपर्ली. I think there's a clear consensus that we're not okay with them being back. We're not okay with them being back in terms of the circumstances that they bring with them, and also the fact is if you're looking towards the future, then just completely abandon the idea of having them. We tweeted this from Change of Pace 3 months ago. It was very controversial. आप एक अंडरस्टूड डिसएडवांटेज लेके ग्राउंड में उतरे, जैसे सरफराज को हम लेके चल रहे थे पिछले 2 साल. एक अंडरस्टूड डिसएडवांटेज है क्योंकि ये दोनों इतने बड़े चोकर्स हैं और इतने बड़े फेलियर्स हैं. वर्ल्ड कप में जाके इन्होंने गंद ही मारा. अभी बंगालियों को कुट लेंगे, जाके नीदरलैंड्स को कुट लेंगे, फिर क्या करे बंदा यार. फिर इंग्लैंड में भी शायद हमें 1-2 T20 जीत जाए बाबर की वजह से या बॉलिंग की वजह से, फिर ये हरामी बच जाएंगे. I disagree with them being selected now. That doesn't mean that I think that they've had horrible careers. I think Hafiz has done his fair share for Pakistan cricket. He's opened the bowling. यार you cannot give me 10 match winning performances in Hafiz's entire career. आप बताओ मुझे. That's just because I have a bad memory. But I'm just saying he's done his part. And he should be seen out. I seen out क्या? बॉलिंग पे भी बैन है तो फायदा क्या इसका टीम में? छठा बॉलर भी नहीं है. This is the issue. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसको टीम में होना चाहिए. मैं ये कह नहीं रहा. What I'm most annoyed about, what I'm यार जन्नम में जाए disrespect यार. खुद तुमने खुद कहा कि वो रिटायरमेंट पैकेज बनाया हुआ है तो इनको निकालो ना ऐसे. गलत है, वो गलत है. तो फिर क्या disrespect? LPC disrespect. उनकी कोई इज्जत नहीं है. उनमें कोई खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार. वो अभी भी खेलना चाहते हैं 2019 में जलील और बिस्त होने के बाद भी. फिर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए हम रिटायर हो जाएंगे इसके बाद. यार तो ठीक है, आप उनकी ब्लफ कॉल करो कि ठीक है हो जाओ रिटायर. इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं ना. मिसबा ने क्या गंद मारा है यार. Again, this is another misbah decision that is
radical, doesn't make sense, and it's not very. And the most annoying thing is they have destabilized the fast bowling. आपको क्या जरूरत थी आमिर को निकालने की यार? फिर न्यू बॉल पे आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया. शाहीन आ रहा है और उसके साथ कौन? हसनैन का भी हमें कुछ पता नहीं है न्यू बॉल में क्या बॉल डालेगा वो. Why has Imam Haq been dropped? इमाम का क्या काम है? इमाम का T20s के अंदर अभी तक कोई ऐसा ऐसा नहीं खेलेगा ना. वही हो गया ना. फिर मलिक हफीज आ गए, फिर खुशदिल आएगा, फिर इफ्तिखार आएगा. ये आपके 6 बन गए. Exactly. Right. Let's close out the show. Bangladesh are finally coming to town after the whole charade that they pulled off. Alhamdulillah. Went to Dubai and threw some tantrums, and it's been difficult for them to come to Pakistan apparently. But they're coming down. Friday's the first game. We'll be live for the game. We'll be commentating on it, all the 40 overs. I think it's happening in Lahore. All are in Lahore. All games are in Lahore at the Gaddafi. What are your predictions for the series? I would be very disappointed if Pakistan don't take this 3-0. I think it's going to be a bit closer than that because the Bangladeshis are also. I know, but I'm genuinely hopeful with this Pakistan lineup at home because of the fact कि यार इतने हफीज मलिक भी आ गए ना. Exactly. बंगला बुलीज. इतने experienced players आपके air quotations whatever जो home conditions में अगर आपको नहीं जिता सकते तो फिर वाकई इनका कोई फायदा नहीं है. The one thing I am talking about is Tamim Iqbal is in that side. अच्छा player. Peshawar Zalmi veteran. He's played in Pakistan recently as well. सरकार भी ठीक है, मिथुन भी ठीक है, लितन दास भी ठीक है, मुस्तफीज भी आया हुआ है. It's actually a lot better than the Sri Lankan side that we lost to. It isn't bad by any means. I think the Sri Lanka side had a bit more explosiveness in terms of their batting. We saw this. We saw that they had the guys who could really, go the yard in terms of their hitting. The Bangladeshi side in general, besides Mahmudullah and Tamim at the top, don't have that kind of power. Mushfiq is actually a big loss for them. Saqib is not there for the next couple of years, so that kind of dynamic should play in Pakistan's favor. Rahim's contributions to the Bangladesh team, but before we bow out for tonight. Questions देखो कोई अगर हमारे कोई है. Extended episode. There is one thing that if Pakistan don't win 3-0, they lose their number 1 ranking. So that's why यार आप at least series तो कम से कम जीतो किसी भी हालत में. So that is a good one. We've discussed the pros and cons of 4-day Test cricket. There's a lot of comments in for predictions for the PSL, but I think we're going to wait for that for another show. PSL, we'll be around before the PSL, so don't worry. For the PSL, and a little bit news coming in right now that 2 enclosures have already been sold out for the PSL opening ceremony. अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है. So 2 enclosure पूरे मैं ये कह रहा था टोटल पाकिस्तान में या last question of the day पाकिस्तान. Last question of the day from Abdur Rahman. I thought this was a pretty decent question, one that I've been mulling about thereabouts for a while. मल रहे थे आप. His question is why is there no international quality sports channel in Pakistan? Why do big brands like Sky or Star don't come to Pakistan, even though we have the potential 150 million. यार it's a simple matter of piracy and economics. आप piracy control नहीं करते. आपने अभी तक अपने वो digitalized platform आपने बनाया हुआ नहीं है. सेट टॉप बॉक्स वाला सिस्टम ही कोई नहीं है आपका पाकिस्तान में. पता नहीं कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि आ रहा है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है. केबल टीवी वाली चीज बहुत आसान है ना. एक बंदे ने लेके 300 रुपए में आप वर्ल्ड कॉल लगा लो. 3 लाइंस निकाल दी हैं, वो पूरे मोहल्ले को उस तरह प्रोवाइड कर रहा है. इट वुड बी आइडियल. अच्छा, और दूसरा मसला क्या हो गया कि पाकिस्तान में ये वाले भी जो पायरेटेड चैनल्स हैं स्काई स्पोर्ट्स वगैरह के, वो भी नहीं आते. Even those are being controlled and banned. Star Sports जो है वो इंडिया के relationships की वजह से Sony Live whatever. नुमान ने आज जो हमारा फिरौन बना हुआ है उधर पीटीवी में, तो उसने सारे कंट्रोल किया. यार उसने YouTube चैनल भी खोल लिया, उस पे भी उसको 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए. मतलब हो क्या रहा है दानिश कनेरिया के किस हिसाब से. मैं आपको बात बताऊं, वहाब और आमिर सिर्फ ड्रॉप हुए क्योंकि ये जो हमारे YouTube में सारे बैठे हुए हैं ना, इन्होंने इतना उनको पाउंड किया हुआ, इतना इज्जत नहीं करते क्रिकेट की है वो. कल मैं देख रहा था राना नवीद भी लगा हुआ है. मैंने कहा यार उसका भी चैनल है, उसका भी चैनल है YouTube. उसको भी कहो इंडिया के साथ वीडियोस बनाए, उसके भी मिल जाएंगे. उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में यार, वो जो 6 विकेटें उसने ली थी. I do want to add one thing, that if Misbah Haq is being influenced by essentially YouTubers, he's not the right man for the job. Certain types of YouTubers. Well, I mean, these days our prime minister is being influenced by them too. But the point that I do want to make is that so far there hasn't been a single decision. ये friendly fire हुई. Friendly fire. But so far the decisions that Misbah has made in charge, none of them have made sense to me, and none of them actually remind you of the Misbah that we used to. यार it kind of makes sense क्योंकि हमने देख लिया कि यार हमारा मिडिल ऑर्डर 2 दफा फ्लॉप हो जाएगा. हारिस को इन्होंने ट्राई किया है और फिर रिजवान को इन्होंने ट्राई किया है. उसी बात पे आ रहा था ना, आसिफ बार-बार फेल हो रहा है. नहीं यार, इससे पहले भी जो डिसीजंस हुई हैं
I understand the decisions, but I don't like them. Exactly. This is my issue as well. I don't like the fact that Malik and Hafiz are back, but हमने वही कहा ना कि जो domestic level पे performance थे, एक के अलावा या दो के अलावा आपके पास नहीं निकल रहे वो नाम, और जो हैं वो खुशदिल इफ्तिखार वगैरह वो खेल रहे हैं. So it's a difficult call on his part too. I'm gonna throw my hat in the Justin Langer basket right now and say, you know, it took him a while to get control of I said the exact same thing. Yep. Lineup, and if Misbah comes around, I think he's a good man for the job. We know that he's a good man. I'm really annoyed by the way he's dealing with the press right now. There's this holier than thou attitude that he comes across with. यार उसने 6 साल बर्दाश्त किया इनके ताने, अब उसको यार मेरी बात सुनो ना, when you're banking यार जब शोएब जट जैसे लोग हों तो फिर आप क्यों रिस्पेक्ट करोगे इनको? मैं तो कहता हूँ उठ के इनको जूते मारा करो. शोएब जट को जूते आपने मारने तो मैं आपको there is nobody respectable in there, maybe 5 people max जो आप कह सकते हो यार ये अच्छे लोग हैं, बाकी सब चूड़े हैं यार. I understand what you're saying, I get where you're coming from, but again if you dealt with a player, and these quotes are the ones that make it to the media, so and not just Pakistani media but international media. He's in a position of power, and I think after the prime minister, he has the biggest job in Pakistan. यार would you rather army chief मेरी बात सुनो would you prefer छोले बेच रहा है, would you prefer a person keeping it real, or would you prefer doctored, you know, politicized and you know politically correct stuff? आप NBA देख लो, वो हर प्लेयर लड़ रहा होता है, हर प्लेयर उसको कहता है he's not keeping it real, though. He's not keeping it real. He's acting like the sassy uncle that's like, तो ठीक है ना, वो क्या फर्क पड़ता है? Yeah, but then stop asking stupid questions. I understand तुम अपने आप को मीडिया समझते हो, अब इस वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है. यार मिर्जा इकबाल, मेरी बात सुनो, मिर्जा इकबाल बेग हसन अली पहली PSL के बाद जब ये इमर्जिंग कहता है यार ये कौन आप इंटरव्यू के लिए ले आए, ये कौन दो दांत का बकरा है, को बड़ा स्टार लाओ. द नेक्स्ट ईयर आफ्टर दैट ही वाज द नंबर 1 रैंक्ड ODI बॉलर एंड ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ CT17. ये लोग हैं, इनकी ये औकात है यार, हमारे कौमी हीरोज को ऐसे ट्रीट करते हैं. शोएब जट की तुमने मतलब वो राइट, कोई लड़की सेल्फी ले रही है शदाब के साथ, कहते ओए क्या हुआ, यही तो स्कम है याया बच्चानी जो 15 साल से हमारी टीवी पे आ रहा है. और एक बात याद रखो कि मिसबा पहली बार इनको जो है ये इंटरव्यू नहीं दे रहा या उनसे सवाल नहीं ले रहा, वो बचपन से मतलब जब से क्रिकेट खेला तब से इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पला बड़ा है. उसने आर्टिकल्स भी इनसे ही सुने, सारी चीजें देखी. इफ यू बीन थ्रू ऑल दैट, आई रियली डोंट सी हिम आंसरिंग विद स्ट्रेट फेस. यार आपने नहीं देखा नसीम बच्चे को कैसे रुलाया था? ऐसे तो कुत्ते के बच्चे हैं ये लोग यार. नसीम को रुला के कैमरा मार रहे हैं. ये माजिद भट्टी जैसे गांडुओं को ऐसे या फिर आप नहीं करा सकते हो यार, उनकी कोई इज्जत नहीं बनती. ये R-rated हो गया, जोर रोगन आ गया. मैंने मजाक पे जोर रोगन लिखा था, आप सीरियस हो गए. स्पीकिंग ऑफ जोर रोगन, यार वैसे कॉनर मैकग्रेगर ओए होए 40 सेकंड में UFC I find it too savage. मुझसे जो भी है 40 सेकंड में अगले ने जो है उसकी वो तो सारे मैच ऐसे होते हैं 1-1 मिनट के. ये होना चाहिए था रबाडा वर्सेस जो रूट. Anyway, we'll end on a positive note. We'll say 3-0 to Pakistan against the Bangladesh series. हाँ इंशाल्लाह, उससे पहले भी अच्छा नहीं, अब वीकेंड पे आ रही है तो इंशाल्लाह मेरे को मुलाकात होगी. Okay, so we will see you all live on Friday for the Bangladesh versus Pakistan game, and I love saying this, that it's going to happen live in Lahore. And not in the empty stadiums of the UAE or Karachi. Oof, good one. One for me. One for you. 4 for Flaja. अच्छा हमने एक टॉपिक तो छेड़ा नहीं. Who is our next ODI captain? भाई वनडे भी हम खेल रहे हैं उनके साथ. Yeah, let's talk about it during the Barbarism. I think we'll have some time during the broadcast. But we'll get maybe put a poll out. Thank you for listening to us. There's a few people that are asking if this is going to be on Spotify. It will be. It will be posted by tomorrow morning, ideally. And you can catch it there and Google Podcasts and we'll WhatsApp it to you if you want. And we'll WhatsApp it to you. Until then, have a good one and pray for yourselves, pray for your Pakistan cricket, and pray for your podcast. Pray for our podcast. See you. Bye bye.